अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो में क्या फ़र्क है। इसके बाद हम जो है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट सच एज अ ह्यूमन हैंड आर अ कौन पैडल मूव्स थ्रू द वाटर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या वो इंसान का हाथ है या फिर कोई और इस किस्म का ऑब्जेक्ट है वो पानी में से मूव करता है, तो देन देयर इज़ अ लिटिल अपियरेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द इमीडिएटली सराउंडिंग वाटर। अब आप जो है ये पानी में अगर हैंड इंटर करेंगे और उसकी मूवमेंट करेंगे तो एज अ रिजल्ट जो वाटर का फ्लो था उसमें आपको डिस्टर्बेंस नज़र आएगी। वो वैसा नहीं होगा जैसे पहले आपके हैंड या फिर कोई और चीज़ इंसर्ट करने से पहले था। And immediately surrounding water if the relatively velocity of the object with respect to the water is low. However, if the relatively velocity of the motion through the water is sufficiently high, waves and eddies will appear. Even कि अगर जो है velocity high होगी तो waves produce होंगी और वो आप देख सकेंगे, लेकिन अगर ये कम होगी तो फिर waves produce नहीं होंगी, लेकिन disturbance आपको फिर भी show होगी उसके flow में. Then we are talking about when an object moves with a sufficiently low velocity relative to any fluid medium. The flow of the adjacent fluids is termed as laminar flow. The laminar flow is characterized by the smooth layers of the fluid molecules following parallel to one another. When an object moves with the sufficiently high velocity relative to surrounding fluid, the layers of the fluid near the surface of the object mix and the fluid is termed as turbulent. The rougher the surface of the body, the lower the relative velocity at which the turbulence is caused. The laminar flow and turbulent flow are distinct categories. If any turbulence is present, the flow is non-laminar. The nature of the fluid flow surrounding an object can dramatically affect the fluid force exerted on an object. In the case of the human body during the swimming, flow is neither completely laminar nor completely turbulent but transitional between the two. अब यहाँ पर आप लैमिनर और टर्बुलेंट दोनों फ्लो देख सकते हैं. लैमिनर फ्लो characterized by smooth parallel layers of the fluid while the turbulent one is the फ्लो characterized by mixing of the adjacent fluid layers. अब हम बात करें यहाँ पर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ की, जो हमने डिटेल से आज की वीडियो में देखनी थी. अदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द forces a fluid generate are fluid density and specific weight and viscosity. And density P is defined as mass by volume, and the ratio of the weight to volume is known as specific weight. The denser and heavier the fluid medium surrounding a body, the greater the magnitude of the force the fluid exerts on the body. The property of the fluid viscosity involves the internal resistance of a fluid to flow. The greater the extent to which a fluid resists a flow under an applied force, the more viscous fluid is. A thick molasses, for example, is more viscous than a liquid honey, which is more viscous than water. Increased fluid viscosity results in the increased forces exerted on the body exposed to the fluid. The atmospheric pressure and temperature influence fluid's density, specific weight, and viscosity, with more mass concentrated in a given unit of fluid volume at higher atmospheric pressures and lower temperatures, because the molecular motion in the gas increases with the temperature. The viscosity of the gas also increase and the viscosity of the liquid decrease with the increased temperature because of reduction in the cohesive forces among the molecules. अगर यहाँ तक आपका कोई भी सवाल है या फिर कोई बात आपको लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो के हवाले से या फिर फ्लूइड प्रॉपर्टी के हवाले से समझ नहीं आई तो पूछ लें. अल्लाह हाफिज़.